मुंबई, 27 जनवरी। अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने और शैक्षिकी परिदृश्य को समृद्ध करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। जेट किंग इन्फोट्रेन लिमिटेड ने एफपीटी विश्वविद्यालय, वियतनाम के साथ अपने रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। ये साझेदारी एक गतिशील और विश्व स्तर पर जुड़े शिक्षण वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जेट किंग और एफपीटी यूनिवर्सिटी ने एक दीर्घकालिक और प्रतिष्ठित शिक्षा ब्रांड बनाने के लिए 2011 से सहयोग करना शुरू कर दिया था। वो क्षण जेट किंग और एफपीटी की उपस्थिति का प्रतीक था। समुदाय के कई वर्षों के अनुभव और विश्वास के साथ जेट किंग और एफपीटी लगातार प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करता आ रहा है, खासकर साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। और अब जेट किंग और एफपीटी एक संभावित क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा है। And we are going on a big revolution of training people in semiconductors and IC design. It is a beautiful next 10 years, right? So when our peak, Jet King's peak was between 2000 and 2010, where the whole computer industry was going to the next level. As you see, the next 10 years, there is going to be almost 80% growth, where the whole semiconductors and IC design is going to become $1,883 billion by 2030. So it's very exciting. I'm also honored by the FPT team to give me such a beautiful present. I mean, I'm just touched and I'm teary eyes. So I was for a very long time, in 2012, I had left the domestic, and then me and Indranil were focused on the international market, right? And there was a very special feeling that for many years my focus just was to see how we can grow the relationship with FPT team. The good part about Vietnam and specifically FPT team is that the relationship was very progressive, right? They implemented what we taught. We also learned, because you cannot go as per Indian standards to Vietnam or as per Vietnam standards to India. So you have to learn what are the local cultures, what are the local ethnicities, what are the how Vietnamese get influenced. It's such a big market, right? So I learned, right? It's still a long way to go. I'm trying to still learn Vietnamese, and I hopefully by 2030, in the next 5 to 10 years, we will take this collaboration to the next level. The global semiconductor market reached a value of 591 billion by 2022, and this partnership with ago, Vietnamese information technology was nearly zero, and at that time, our government in general and FPT company in particular, we look around all over the world to find the way to build information technology industry. We look at, of course, USA, Ireland, Israel, and many countries. But there was one country that inspired us a lot, is India. And many companies like Infosys, Wipro, Aptech, Checking, Tata, very famous in Vietnam. करके इंडस्ट्री में करेंगे, दैट विल मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग. जो श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कोर्स चालू किया, बिकॉज उनका फोकस बहुत हाई है सेमीकंडक्टर और आईसी चिप डिजाइन पर. तो ये खाली जेट किंग ने इंडिया के लिए किया है, ऑल ओवर वर्ल्ड?
वर्ल्ड में सभी जगहों के लिए किया या फिर ओनली फॉर इंडिया के लिए किया? तो अभी 2 देशों में कर रहे हैं हम लोग, इंडिया, राइट, इंडिया में हम लोग बॉम्बे और बैंगलोर में कर रहे हैं, एंड वियतनाम में भी 2 cities विच इज़ होचिमिन एंड हनोई टू स्टार्ट ऑफ विद. तो क्या जेट किंग का अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए, स्टार्टिंग जो की थी, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है और बच्चों का किस तरह से कनेक्टेड रहे हैं इससे अभी तक? अगर नंबरिंग ऑफ देखा जाए तो कितने कनेक्टिंग रहे हैं इस? Exactly. So one of the main strengths of Jet King has always been electronics. In fact, in our first semester, first module में ही हम electronics सिखाते हैं, right? और हमने काफ़ी corporate training for semiconductor and IC chip design किया हुआ है, right? Plus हम लोग का जो curriculum है, that is very focused on electronics और practicals. तो ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए we have created a beautiful content and syllabus and curriculum for semiconductors and IC chip design. तो आज जो लॉन्च किया गया है उससे कैसे कनेक्ट हो पाएंगे स्टूडेंट, और उसके लिए आपकी कितनी सारी तैयारी होगी? अगर बड़े नंबर्स में स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए आप किस तरह से तैयारी होगी कि उन्हें आप ये स्टडी दे पाएंगे? So right now we are already training around 10,000 students, right? So when we are training 10,000 students, we want to aim that in the next 2 to 3 years we would be training at least 5,000 students in India, right? And in 2 to 3,000 students in Vietnam. That is our goal. लोअर इनकम ग्रुप के बच्चों के लिए क्या ये कोर्स अच्छा रहेगा? Right. So our focus, Jet King, agar if you see the price point itself is low, right? So our main focus is lower income group, right? There is one India, which is little elite, and there is Bharat. So our focus is mostly Bharat, which is the masses. A lot of our people, 60 to 70% people come from Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Orissa, and these small places. Even in Vashi, Dadar, all our centers, if you see the number of students, most of them come from smaller villages. So our focus has been that. Even if you see the start of the curriculum, it starts with the base. So even the student who has no technical knowledge can go ahead, learn this and get a job in the industry. We make them industry ready. That is our core focus. सरकार की सब्सिडी कितनी है इसमें? अभी फिलहाल तो see we are partners with NSDC, right? Subsidy है, but then we have to apply for that subsidy, and once we get a certain grant, then we will focus on that. जो निचले तबके के लोग स्टूडेंट So मोदी जी ने 78,000 करोड़ का अनाउंस किया है. Now and ये लास्ट 2 हफ्ता पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था. तो एक बार हम अप्लाई करेंगे, then we will see how much is allotted to us. But there is no particular amount that has been allotted to us as of now. सर हर्ष वर्मनी जी, ये कोर्स गवर्नमेंट के सेक्टर में जाने के लिए भी है या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए? Yes, so you'll be happy to hear that abhi, in fact, in 2 weeks pehle there was a big announcement by government where they want to focus on BCA as a vacancy, where we teach BCA. So this NSDC certificate helps a student to get jobs in government also. तो जेट किंग जॉब की भी ये मतलब गारंटी देता है कि जो भी जेट किंग के स्टूडेंट है उनके लिए जॉब की भी प्रोवाइड? Exactly, it's 100% job guarantee. Yes. सर अगर स्टूडेंट्स आपसे जुड़ना चाहेंगे तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, या अलग चीज़ों से कैसे उससे आप लोगों तक पहुंचेंगे, कनेक्टेड कैसे होंगे? So the way we are हम लोग जो दूसरे कोर्सेज सिखाते हैं, राइट, हम कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं. इसलिए वन ऑफ द रीजंस हमने ये PR कैंपेन रखा है, तो बच्चे सुनेंगे और फिर हमारे पास आएंगे. बहुत सारा हम लोग का वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी होता है. तो काफ़ी बच्चे जो हमारे पास आते हैं, वर्ड ऑफ माउथ, किसी को जॉब मिला, फिर उसने अपने दोस्त को बताया, उसका दोस्त आया हमारे पास, तो उसका भी बहुत एक बड़ा नेटवर्क है हमारा, जिससे हम लोगों तक पहुँचेंगे. A lot of similarity in culture and in the IT industry development. Many company in India inspired Vietnamese people a lot, from Tata, Infosys, Aptech, Jet King, and a lot. And now with new technology trend, semiconductor, Vietnam once again will follow success story of India. Of course, in Vietnam now, especially in university, we have chip design and semiconductor related courses, but the number of students is very small. And to develop the new industry
the semiconductor industry, we need a large number of students to place into the industry. And that's why we collaborate with JETKING. JETKING has a good curriculum, cutting edge technology and industry relevant. It's very important. And with collaboration with JETKING, we are sure that we can provide a large number for the labor market. And I think it's the most value that we can provide for Vietnam country and semiconductor development in general in Vietnam. FPT के बारे में कुछ बता दें सर. Can you speak something on FPT so Yes. that all the media people know about it? FPT is one of largest IT company in Vietnam. Right now, we have 70,000 staff, and FPT company include many sub-company in education, in software development, in telecom. Very recently, our FPT software company reached $1 billion revenue milestone. FPT के पास किस तरह के ट्रेनर हैं, मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ. What kind of trainers does FPT have? FPT education. FPT company has been established 35 years ago, 36 in 1988, and FPT education now 25 years old from 1999. Now we have around 160,000 students from first grade to postgraduate. सर इंडिया में जेटकिंग जो ट्रेनर प्रोवाइड करेगी लर्नर को, वो किस तरह के होंगे, क्या उसका होगा, क्वालिटी एश्योरेंस होगा? So JETKING and similar to FPT, we have strict quality standards. So they have to have a certain kind of resume, they have to have a certain kind of qualification, they have to go through a certain test, they have to be certified in curriculum. What also needs to happen is they have to they spend 3 to 4 months preparing. It's called FCT, faculty competency test. They have to go through that. Once they go through that and go through our senior curriculum delivery head, once he approves, then only he becomes a trainer. ये कितने साल का कोर्स है? This is in Vietnam, it's for 2 years, which is In going to be India? similar. It's for 2 years only. Yes. In India? Yes. India 2 also years. 2 years. Yes. We are launching this course together, right? We will market this course together. This is the first time in the world that has happened that 2 courses are going to be launched at the same time. We will have a similar program, similar delivery mechanism, and we'll make sure that the students are getting jobs after 2 years in a similar manner. ये डिग्री कोर्सेज के लिए भी होगा या डिप्लोमा? No, as of now, this is just focused as it's called higher diploma in chip design. Yeah. Sir, is Sir, it exclusive for students or working professionals who are trying to upskill their Yeah. You want to answer that? Very right question. Is it exclusive for students or working professionals also can take this course? Both. working professionals can also upskill themselves? Yeah, Yes. for high school student and working adults. Yeah. आपसे पूछिए, इनसे पूछिए, सभी देखिए. Yes, this is for both. This is for students as well as working professionals. Both of them generally are focused. Generally, 60 to 70% end up being students, and 30 to 40% ends up being people who are working professionals. They are doing some job and they want to upgrade their skills or they want to change their industry. They join this kind of course. Right. आप लोग ट्रेनर भी एक्सचेंज करने वाले हैं, इंडिया टू वियतनाम, वियतनाम टू इंडिया? Is there some exchange program in terms of trainers? He's asking. They want you to speak. If you can talk for a bit. Yes, recently we sent our student to New country to get some experience. I think in the near future we send our student to India too. Financial fighting is a partner. Not only that thing, Yes. and other company, other training institution,
to send our students. Sir, give advice some students. What advice do you have for students? फ्री प्रेस से कुछ सवाल है भंडारी सर. एक मिनट खाली इनका बोल. What advice do you have for students? Who will go to India or what? Or in general? Yeah. This is Indian students will listen to this. I will advise that they have to catch this opportunity, because going to India, they will get not only knowledge, not only skills, but also experience richest culture in the world. या पीटी को कितना साल हो गया एस्टेब्लिशमेंट हो गया? 36 years. 36 ईयर. और लगभग 50 इयर्स हो गया जेट किंग को. So Jet King, this is the 78th year of Jet King. 78 years. This was established in मैं सवाल दे रहा 1947. हूँ फ्री प्रेस जनरल से जो 100 इयर्स के करीब. Oh, very good. Congratulations. दोनों की लेगेसी एक बहुत बड़ी लेगेसी है. Beautiful. सर सवाल ऐसा है कि अभी जो इंडिया में आप कोर्सेस जो आप एक्सपांड करेंगे 2 सेंटर्स का आपने अनाउंसमेंट किया, राइट? तो अगर 2 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट इंडिया की अगर पॉपुलेशन और स्टूडेंट्स के लेवल देखते हुए आप अगर एक्सपांड करना चाहते हो तो किसी यूनिवर्सिटी के साथ में या किसी इंस्टीट्यूशन अलग इंस्टीट्यूशन के साथ में टाइप करके करोगे या इंडिविजुअली आप सेपरेट स्प्रेड हो जाओगे इंडिया में, कैसा रहेगा मतलब? So we'll do both. So if once this course becomes successful in 2 centers, तो उसके बाद हम हमारे जो बाकी सेंटर्स है उसमें रूल आउट कर सकते हैं. सो टाइप रहेगा यूनिवर्सिटी के साथ में या आप खुद ब खुद करोगे डिस्ट्रिक्ट? इसमें यूनिवर्सिटी की टाइप देखिए एकेडमिया का प्रॉब्लम ये है कि उनको गवर्नमेंट का काफ़ी लेना पड़ता है. वेराज ये हम लोग का जो है, हम लोग इंडस्ट्री से रेलिवेंट कोर्सेज बनाते हैं, तो हम लोग को ऐसा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. बट हम लोग ने जैसे अभी रिसेंटली हम लोग का जो यूनिवर्सिटी टाइप्स है इंडिया में, राइट, तो अगर उसका डिमांड हुआ, बच्चों का डिमांड हुआ, तो हम लॉन्च कर सकते हैं BCA इन चिप डिज़ाइन एंड IC. वो कर सकते हैं नेक्स्ट के 2 साल में इफ़ देयर इज अ डिमांड मार्केट फॉर इट. यस, थैंक यू.